Class 7 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 8, that is the transfer of heat, and that is question answer. Let us start while with your chapter. So first of all, what is the transfer method of the heat? And that the first is the conduction. In conduction, transfer of heat, that is the only particles. One particle transfer to the another particle. This one is the without moving the particle transfer to another particle, and that particle is also transferred to hit that particle, and so on. It's going on. In convention, one particle is getting heat and going upward, and upward pulling and coming down, and then it is also heated and get heat. हीट लेकर फिर से ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है. रेडिएशन इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में इसको इट डजंट वांट टू मीडियम बट बोथ हैव द मीडियम. चलिए देखते हैं तीनों पार्ट्स आपका. फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज द रेडिएशन. तो सबसे पहले कंडक्शन को शो कर रहे हैं. व्हाट इज द कंडक्शन? इट इज अ मेटल स्पून. Metal spoon is heated with the help of conduction, but hot water is यानी hot water जो heat हो रहा है that is the convection. It is the conduction heat conductivity of the metal. इसमें क्या हो रहा है, ये आयरन के नील्स हैं और वैक्स से इनको लगा रखा है. जैसे यहाँ कैंडल से हीट अप करते हैं तो क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर टू दैट साइड. हमेशा हीट जो होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करती है. तो वैक्स क्या होता है, मेल्ट होना चालू होता है, तो इसके साथ जो पिन लगी हुई है ये भी डाउनवर्ड्स में ड्रॉप हो जाती है. तो ये आयरन स्ट्रिप है. आयरन स्ट्रिप को जब भी गर्म करते हैं तो किस मेथड से गर्म होता है, ये कंडक्टिविटी यानी कंडक्शन मेथड से हीट अप होता है. नाउ इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट के लिए शो कर रखा है इन्होंने. एक इंजन हाउस ने ये एक्सपेरिमेंट करा था. ये वुडन बॉक्स है. वुडन बॉक्स में बॉयल वाटर ले लिया गया है और इसमें रॉड लगा दिए डिफरेंट टाइप की. ये सिल्वर की रॉड है, फिर कॉपर की रॉड है, इसमें आयरन है, एल्युमिनियम है, लेड है और वुड है. और इसमें क्या करा, वैक्स लगा दिया. पूरे हर तरफ वैक्स लगाने के बाद जब इसमें बॉइलिंग वाटर डाल देते हैं तो ये वैक्स मेल्ट होना चाहती है और फिक्स पॉइंट पे जाकर के रुक जाती है, मेल्ट होना बंद हो जाती है. दैट मीन्स कि सिल्वर एंड कॉपर ये सभी जो है इनकी जो मेल्टिंग लेंथ है इट इज ऑलवेज प्रिपोर्शनल टू एल स्क्वायर. कंडक्शन के प्रिपोर्शनल होती है एल स्क्वायर के. ये तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये कंडक्टिविटी जो होती है वो इनकी वैक्स की जो मेल्टिंग है उनके स्क्वायर के प्रिपोर्शनल होती है. मतलब जितनी ज्यादा ये कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा इसकी वैक्स मेल्ट होगी. चलिए आगे देखते हैं. ये है हमारे पास कन्वेक्शन मेथड. कन्वेक्शन करंट देख रहा है यहाँ पे बॉयल को इसको वाटर को हीट कर रहे हैं. तो ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हीट को लेकर के ऊपर की ओर चलना चालू हो जाते हैं और ऊपर से जो है आपके दूसरे पार्टिकल जो कूल होते हैं वो धीरे नीचे आ जाते हैं, फेट लेते हैं और फिर ऐसे चलता रहता है. तो इट इज योर क्लास. और ये कन्वेक्शन मेथड जो बताया गया है वो है. और ये वायर गेज है जिस पे रख करके इस पॉट को हीट अप कर रहे हैं. इट इज योर स्टैंड. जिस स्टैंड पे रख करके ये कैंडल जला करके हम इसको हीट कर रहे हैं. तो दैट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वेक्शन. नाउ इट इज द वाटर. ये भी आप देख लीजिए क्या है, ये पीस ऑफ आइस है और wrapped इन द वायर. वायर में इसको लपेट के रखा गया है और ये वाटर है. वाटर से इसको हीट अप कर रहे हैं यहाँ से. तो ये भी हीट अप हो जाती है. तो ये एक और एक्सपेरिमेंट दे रखा है. इसमें ए और बी दो हॉल हैं और ये कैंडल यहाँ से जल रही. सी हमारी ये सी कैंडल है, ए और बी हॉल्स हैं. अगर हम बी हॉल को बंद कर दें तो इसके हाफ पार्ट से ऑक्सीजन आती है और हाफ पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. यहाँ पे अगर दोनों खुले रहते हैं तो बी से ऑक्सीजन जाती है और ए से कार्बन डाइऑक्साइड मूव हो जाती है, निकल जाती है. ये आपका रेडिएशन का दिखाया हुआ. द मेथड इज रेडिएशन. विदाउट टचिंग द फ्लेम ऑफ दिस कैंडल वी कैन मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर. ये थर्मामीटर है, ये कैंडल है, वैक्स मेल्ट हो रही है और ये बर्न हो रहा है. So you can see it is a thermoflask. थर्मोफ्लास्क में कोल्ड चीज रखते हैं तो कोल्ड रहती है और हॉट चीज रखते हैं तो हॉट रहती है. हाउ कैन मेंटेन द टेम्परेचर? सो इट इज योर कॉर्क. और ये डबल लेयर ग्लास बॉटल है
और सिल्वर पॉलिश होती है, वैक्यूम होता है, आउटर लेयर होती है और ये स्प्रिंग होता है जिससे इसके कोई झटके लगे यानी कि जर्क लगे तो इसको ये झेल जाए। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोफ्लास्क है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट टेक प्लेस इन थ्री वेज, namely first one is the conduction, second one convection and third one is the radiation. When two objects are at the same temperature, there is no flow of heat. Heat flow that takes place through the molecule of matter is called conduction. The molecules do not move during this transfer. Materials that conduct heat are called conductors of heat. Metals like silver, copper, aluminum and iron, etc. are example of conductors. Wool, wood, straw, paper and the thermocol, etc. are the examples of insulator of heat. Liquids and gases are insulator of heat. However, even though mercury is a liquid, it is still a conductor of heat because it is a metal. In liquid, the gases, the flow of heat takes place through the movement of the molecule and is called convection. In convection, heat is always transmitted from lower point to upper point. The phenomena of heat flow from hot object to colder object without any medium in between is called radiation. The heat that gets transferred like this is called radiation energy. The heat from the sun reaches us by radiation. Black or dark colored objects are good absorbers as well as good emitters of heat in comparison to white or light colored objects. A thermoflask is constructed in such a manner that heat cannot be exchanged from it by conduction, convection and radiation. किसी से भी ट्रांसफर नहीं हो पाती है हीट। चलिए चूज द करेक्ट आंसर देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट टाइम द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट through solid is due to it is only conduction. So first one is first one is correct. Which is a non-conductor or insulator out of this? कौन सा है? वाटर है, एयर है, थर्माकोल है. So all of these are. Now in the following method, the heat transfer the particles of medium move from one place to another place. इसमें move करते हैं. तो कौन सा है? That is the convection. D part is it. A good absorber of radiation energy is black painted ball or tin box, white cloth, iron ball. So black painted ball है ये आपका good absorber of radiation energy. Heat flows by means of radiation is fastest. So you can write here radiation. Now there is vacuum. There is vacuum between the double layer of the thermoflask. Thermoflask के बीच में vacuum रहता है, bottles के बीच में. Good emitted of radiation energy are also good absorbers. Now fourth one is the black color. Black color is good absorber of heat. Fifth one is both the front surface of the double layered glass bottle inside a thermoflask are painted with white shining paint to prevent heat loss by any method. कोई से भी मेथड से हीट नहीं होती, हीट लॉस. तो एनी मेथड. Now come to the first question. What are the conductor and insulator of heat? Give two examples of each. Such substances in which transfer of heat take place easily are called conductor. For example, silver, copper, iron, gold. Such substance in which transfer of heat does not take place easily are called insulators. So example for example, wood है, air है और wool है, चारों क्या नाम thermocol. A water tank is cool in summer while it is hot in winter. Why? The changes during the summer and winter
affected on the environment and upper layer of the earth. The underground, under around the surface and water remains same. So in winter we find a warm as compound to the surroundings temperature, whereas cool in summer. How does a blanket keep you warm in winter nights if it is not a source of heat? So blankets are generally prepared by arranging wool. Wool and the air trapped in its fiber are insulators of heat. Therefore, they prevent the conduction of heat away from the body. So therefore, a blanket keeps us warm in winter night in spite of not being a source of heat. Why do birds sit with their wings spread out in winter? So birds store in air inside their wings due to which it feels hot. So in the figure there are two holes A and B made as path in the rectangular box. A candle C is the burning inside the box. ये हॉल है यहाँ पर A और ये B है और ये C कैंडल यहाँ पे बर्न हो रही है. So now come to the question. How do convection current inside the box? Show them by the drawing arrow. तो ये arrow आपका शो हो रहा है यहाँ पे दोनों होल्स हैं. तो यहाँ से तो आपका क्या होगा, ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगी और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने चालू हो जाती है. यहाँ से ऑक्सीजन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से वेस्ट गैसेस यहाँ से निकलनी चालू हो जाती है. और अगर इसको क्लोज कर दिया जाएगा तो एक ही हाफ पोर्शन से ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी यहाँ से. चलिए आंसर भी देख लेते हैं. इफ ऑल बी इज ब्लॉक दैट विल बी हैपन एंड इफ वी पुट pregnant stick on A, in which direction will be smoke flow? So you can see your answer. Inside the box, the convection current flows from B to A. If all B is blocked, then the inside the box air will become hot. If we put a pregnant stick on A, the smoke will flow in upward direction. Chimneys of factories are built high up and coal is burned low. Why? Smoke released by the chimney is poisonous. Being hot, it rises up and the heat up air around it. If the height of the chimney is less than, there is the danger of air of that place to become hot, and the poisonous chimneys are built at a higher place so that hot air can go high up, due to which the air at the lower level does not become hot and poisonous. Heat obtained from the sun is more and heat obtained from the moon is negligible. Why? The sun is the source of energy by which heat and light rays continuously reach to all the planets. Planets which are near the sun receive more heat and which are far receive less heat and light. Moon does not have light of its own. It sends the light obtained from the sun to us due to large distance of the moon from the earth. Energy obtained from the moon has negligible heat and energy obtained from the sun has more heat. Why are white colored clothes preferred in summer? Or you can say people prefer to wear white clothes in summer. Why? So you can write your answer. White clothes are bad absorber and excellent reflector of heat, due to which they reflect heat of the sun without absorbing them. Such clothes do not get heated up easily and we do not feel hot. Explain the following fact related to how a thermoflask is constructed. The air between the double-layered bottle is evacuated. So answer is the air between the double-layered bottle is evacuated. Vacuum is created due to vacuum absence of medium. Heat does not flow due to method of conduction and the convection.
So vacuum is bad conductor of heat, due to which effect of external heat does not reach to the things kept inside the flask. Both the layers of the double layered bottle are painted silver. Answer is, a polished surface is a good reflector of heat. The inner silver polished layer reflected heat back to the hot liquid in the flask so that it does not cool down. In case of cold liquid, the outer layer of polished silver reflects the outside or external heat away from the inner cold liquid. The walls in the evacuated double wall regions are also silvered to reduce heat emission or absorption. Next to the correct answer. So the transfer of heat through solid is due to, it is the conduction, which is a non-conductor insulator. तो इसमें वाटर है, एयर है एंड थर्माकोल है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव रहेगा. नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो कौन सा होता है? दैट इज द कॉन्वेक्शन. फोर्थ वन, अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन इज ब्लैक पेंटेड बॉल. फिल इन द ब्लैंक्स, ये हालांकि मैंने करा दिया है इसको, फिर भी आप देखना चाहो देख सकते हो इसको. फर्स्ट में क्या आना था? इसमें रेडिएशन मैंने भरवाया था, हीट फ्लो बाय मींस ऑफ रेडिएशन, ये करवा दिया था, फिर भी देख लीजिए इसको. रेडिएशन, so there is vacuum between the double layer of the thermoflask. So a good emitter of radiation energy are also good absorber. यहाँ पे क्या है? ब्लैक बताया था, मैंने पहले ही बताया था, ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. Now both the front surface of the double layered glass bottle inside the thermoflask are painted with white shiny paint to prevent heat loss by any method. You can write here any method. ये पहले भी करवा दिया बच्चों, इसको कर लेना, वहां से भी कर सकते हो आप लोग. Now answer the following question. Write the name of the method of heat transfer. So the following are the method of heat transfer. First one is the conduction, second one is the convection, and third one is radiation. शुरू में स्टार्टिंग में बताया था. Write the essential condition for heat transfer by conduction. So the following are the essential conditions for heat transfer by conduction. So first one is the both the objects should be in contact with each other. Second है their temperature should be different. हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है हीट. So which material are conductors of heat? Give two examples. Such substance in which the transfer of heat take place easily are called conductors. For example, silver, copper, gold. Explain convection current. So on heating liquid substance, the water of bottom comes in contact with the heat, becomes hot and spread up and becomes light and rise up, whereas the cold water of the top being heavier come down. This process takes place till the entire water becomes hot. This type of current move between liquid or gases are called convection currents. Solid cannot be heated by convection method. Why? So we can write the answer. In convection, molecules should be able to leave their place and go to other place. In convection, molecules themselves move from top to bottom, whereas molecules of solid are not free to move. So magnitude of intermolecular force of attraction is very high in them, due to which the molecules can vibrate on both sides of their main position but cannot change their place. So therefore solid cannot be heated by convection method. On what condition does the heat emitted from hot bodies depend? So emission of heat from a hot body depend on two factors. First one is the temperature of the body and second one is the
color or nature, rough or shine of the surface of the body. Desert area are very hot in days and very cool at night. Why? So desert area mainly consists of sand. Sand cannot store heat in itself because its magnitude of specific capacity is very less. So therefore days are very hot in days and very cool at nights. Why are white colored clothes preferred in summer? People prefer to wear white clothes in summer. Why? So white clothes are bad absorbers and excellent reflectors of heat, due to which they reflect heat of the sun without absorbing them. Thus the clothes do not get heated up easily and we do not feel hot. Why are interior of solar cookers insulate painted black? So answer is black colored is a good conductor and good absorber of heat, and main characteristic of solar cooker is to obtain maximum heat from the sun and use it. Thus to absorb maximum heat from the sun and store it, interior of solar cooker are insulate painted black. Ice is wrapped in jute bag or husk. Why? Jute bag or husk is a bad conductor of heat, thus it does not allow the outer heat of the enter, due to which ice does not melt. That is why ice is wrapped in a jute bag or husk. Why are there ventilators in rooms of high buildings? So doors and windows are built in room to get a clean and fresh air released due to respiration. Process is hot and the polluted, due to which it rises up to remove it. Ventilators are built in upper part of the room. Cooking utensils made from alloy of copper, aluminum or brass are used. Why? All these metals are good conductors of electricity. To cook food in short time, we use cooking utensils made from alloy of copper, aluminum or brass, which allow faster heat transfer to food. Handles of cooking utensils are made up of wood or bakelite. So cooking utensils are generally made up of those metals which are conductor of heat. When food is cooked, then the utensil becomes hot and it becomes difficult to lift. To prevent from the difficult handle, cooking utensils are generally made up of wood or bakelite, because these are the insulator of heat. Now freezer is in the upper portion of the refrigerator. Why? Freezer is in the upper portion of the refrigerator so that the air that gets cooled and becomes heavy due to contact with it starts descending to the lower part. These convection currents make the entire air inside the refrigerator cool. Hot things kept in a thermoflask remain hot and the cold things remain cold for a longer period. Why? Thermoflask is constructed in such a way that transfer of heat in its contact take place by any of three methods. So conduction, convection and radiation. Therefore, things kept in the remains hotter or cooler for a long period. What is the direction of transfer of heat? Transfer of heat occurs from hot body to कोल्ड बॉडी, मतलब वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होती है. सो इज ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर हीट possible or not possible. So by which method is heat obtained to us from the sun? It is the radiation method. On which factor does the amount of heat absorbed by an object depends? The amount of heat absorbed depends on the distance between the object and the source of heat. Now make the correct pairs. So you can write here
it is the A part, it is B part, C part, and D part, and it is your E part. So first one is the solid. Solid के लिए क्या आता है? कंडक्शन आता है. ये this one is the correct. First के लिए solid कंडक्शन है, so you can write here first. Now liquid. लिक्विड के लिए कौन सा मेथड आता है? कॉन्वेक्शन मेथड आता है. So it is your second part and convection is here, so you can write 2 here. Now third one is the black color. Black color is the good conductor or absorber. Absorber होना चाहिए इसको, so that one is the E part, यानी कि ये आपका थर्ड पार्ट आएगा. व्हाइट कलर क्या होता है? रिफ्लेक्टर होता है बच्चों. ये कलर रिफ्लेक्टर है, so C part is the correct, so you can write here 4. मरकरी क्या होती है? मरकरी इज द गुड कंडक्टर, सो यू कैन राइट हियर गुड कंडक्टर, सो यू कैन राइट हियर 5. ये लेसन यही समाप्त हो रहा है बच्चों. नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है शेयर करना है, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके. और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लग रहा है. और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं.